Hi, students, and welcome to Dakshila. I am your science and mathematics expert Kritika Bhandari. Now, what basically Dakshila is? Okay, Dakshila is the fastest growing online education platform with teachers and experts to guide you for the various competitive exams like UPSC Civil Services, NDA, CDS, NTPC, state exams, JEE, NEET, and for the school students from nursery to till 12th. Dakshila prepares you for all these examinations. Beside these competitive examination, Dakshila provides hobbies classes for the interested learners like art, craft, dance, yoga, and much more. After the information, join your interest courses only at Dakshila. Now, student, today's subject is chemistry and the topic in it is elements, compounds, and mixtures. What are the differences? Elements, any substance that contains only one kind of atom and cannot be broken down is called element. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरीके के एटम से बना होता है और हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं. Compound, it consists of atoms of two or more different elements and can be broken down. कंपाउंड किसी भी दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है और हम इसको तोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर H2O, CaOH whole twice, etc. Mixtures consist of atoms of two or more different elements or a compound and can be separated. मिक्सचर्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स करके बनाया जा सकता है और वी कैन सेपरेट इट ईजिली बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स. Now, briefly describing about this elements. An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light or electric energy. Element ऐसा चीज़ होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं इन अ सिंपलर सब्सटेंसेस और हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं फिर तोड़ नहीं सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वी कैन से दैट वी कांट सेपरेट एलिमेंट बाय एनी फिजिकल मीन्स. An element is a substance made up only one kind of atom. एलिमेंट ऐसा सब होता है जिसमें पूरा का पूरा कंपोजिशन सिर्फ एक ही एटम से होता है, एक ही टाइप के एटम से होता है. Now, elements are of three types: metals, non-metal, and metalloid, which can be seen in our modern periodic table. What are compounds? A compound is a substance formed when two or more chemical elements are chemically bounded together. जब दो या फिर दो से ज़्यादा chemical elements bounded होते हैं by the means of chemical, they are known as compound. That is H2O. H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है. फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर इज कंपाउंड made from two elements, hydrogen and oxygen, as I explained to you. Now, student, causes of hardness in water. How water can be hard? Hardness of water is caused by the presence of calcium ions and magnesium ions, Ca2 positive ions and Mg2 positive ions. The compounds, salts that causes hardness of water include calcium hydroxide carbonate, magnesium hydroxide carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate. These four causes hardness in water. Types of hardness. There are two types of hardness in water: temporary hardness, permanent hardness. What are these? Temporary hardness. Temporary hardness, this is a type of hardness which can be removed by boiling. That is, the water can be made soft by boiling. If we boil the water, if it contains temporary hardness, then it can be removed. It is caused by the presence of calcium hydrogen carbonate or magnesium hydrogen carbonate in water. If our water contains calcium hydrogen carbonate or magnesium hydrogen carbonate, we can say that the water is hard and it is temporary hard. Now, what is permanent hardness? It is a type of hardness which cannot be removed by boiling. हम boiling से इसको remove नहीं कर सकते हैं. That is, the water cannot become soft on boiling. ये water soft नहीं बन सकता है at the time of boiling, after boiling. It is caused by the presence of calcium sulfate or magnesium sulfate. Note the difference between the temporary hardness and permanent hardness. That is, temporary hardness में दो चीज़ें होती हैं, calcium hydrogen carbonate और magnesium hydrogen carbonate, और permanent hardness में calcium sulfate और magnesium sulfate present होता है. These two can differentiate between them. Okay. Now, what are mixtures? A mixture contains two or more substances
that are not chemically combined. जो कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो केमिकली कंबाइन नहीं होता है उसको मिक्सचर्स बोलते हैं. मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. फॉर एग्जांपल आर एयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें स्मोक होता है, हमारा लिविंग गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. क्यों? क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन हर पैरामीटर पर सेम नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल alloys. Alloy is the type of a mixture. Now students, see this question. Can you answer this? Which one of the following is known as wood spirit? इनमें से कौन सा wood spirit बोला जाता है? A. methanol, B. ethanol, C. formaldehyde, D. acetaldehyde. Yes, the correct answer is methanol. Now see the second question. Which one of the following elements is present in green pigment of leaf? ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा इनमें से एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ए मैग्नीशियम, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी कॉपर. यस, द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम. Now students, I think the doubts regarding elements, compound and mixture is clear to you. To know more about all the topics in detail for all the subjects, join my classes only at Dakshila. Thank you very much.